So welcome back students. Today we are going to start another article, that is environmental conservation, from our chapter number 4, that is environmental management. So this is your chapter number 4 from Science and Technology part 2. In our last video we could see our social responsibility towards environmental conservation. Now in today's video, now we'll see a big story of a small man, or contribution of a small man towards environmental conservation. So look at the person's name. It is Jadao Molai Payeng. Jadao Molai Payeng. This particular name is from nomadic tribe. मराठी ज्याला म्हणू आपण भटक्या जमाती. So it is from nomadic tribe of Assam. So he was born in 1963. He was working as a forest worker since the age of 16 years. तो 16 साल की उम्र में ही उसने फॉरेस्ट वर्कर बोल के काम करना शुरू किया था. Once what happened, we'll see a large number of snakes. So he could see large number of snakes died in the flood of Brahmaputra. ब्रह्मपुत्र नदीच्या पुरामध्ये खूप त्या सापांचा मृत्यू झाला. So river flowing by the village. As a preventive measure, तो उसे रोकने के लिए मोलाई ने क्या किया देखते हैं. एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड ऑन हिमसेल्फ, मोलाई प्लांटेड 20 बांबू प्लांटलेट्स. प्लांटलेट्स म्हणजे छोटीशी रोप, प्लांट्स म्हणजे मोठे वृक्ष, पण प्लांटलेट्स म्हणजे छोटी रोपटे. In 1979, the local social forestry department began a social afforestation. अफॉरेस्टेशन म्हणजे जंगल लावणे. डिफॉरेस्टेशन में जंगल की कटाई होती है. सो सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑन 200 hectares of land. Molai was one of the few forest workers who were working or looking after that project. Molai continued to plant the trees even after completion of this particular project on 200 hectares. As a result of his continuous work of planting and caring, so he could plant, not only plant but takes care of the trees. The barren area, मराठी ज्याला म्हणू आपण पडीत जमीन, जो उपजाऊ नहीं है ऐसी जमीन. The barren area witnessed the forest cover over 1,360 acres. Today this jungle, 1,360 acres of jungle in Kokilamukh, this is the village, Kokilamukh of Jorhat district of Assam, is the result of the hard work for 30 years made by this particular person. So for his continuous hard work, he has been awarded with the prestigious Padma Shri award by the government of India for his unparalleled work. Now this particular jungle is also known as Molai jungle. Many people come together to destroy the forest, but remember, a single person, if determined, so if a single person, if he is determined, can establish a new forest. Now we'll see the role of biodiversity in environmental conservation. So first of all, let us see what exactly biodiversity means. So biodiversity is the richness of living organisms in nature due to the presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variations with a species. Biodiversity occurs in 3 different levels. So let us take one by one those 3 levels. They are genetic
बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. So, occurrence of diversity among the organisms of same species is genetic diversity. Each human being is different from others. तो ये इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है ओनली बिकॉज ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन हर और इन हिम. पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट मतलब खत्म हो जाना, नष्ट होना. पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीसीज अराइजेस इफ देर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी. तो यदि डाइवर्सिटी नहीं है तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का नष्ट होना पॉसिबल है. विद इन द स्पीसीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये तो आपने पहले 3rd चैप्टर में देखा है. नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी देखते हैं. इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर इन नेचर. तो आपको पता है कि बहुत सारे स्पीसीज जो आप गिन भी नहीं सकते, इनन्यूमरेबल स्पीसीज आर अवेलेबल इन द नेचर. सो दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता. स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, etc. Now the 3rd diversity, ecosystem diversity. So there are many ecosystems which are present in each region. Ecosystem is formed through the interaction. Interaction म्हणजे मराठीत परस्पर संबंध. कुणाचा? Plants, animals and their habitats. Habitat means living place, dwellings, etc. And changes in the environment. Each ecosystem has its own characteristic. हर इकोसिस्टम के उसके कुछ गुणधर्म या तो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स. तो ये सब हर इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं. इकोसिस्टम्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स that we have already seen, and they are either natural ecosystems or artificial ecosystem. There is one short article called sacred grooves. Sacred का मतलब होता है मराठीत ज्याला आपण म्हणूया पवित्र. तो ये पवित्र गुफा है. Grooves means गुफा. The forest conserved in the name of God. तो किसी भगवान के नाम पे कोई फॉरेस्ट यदि कॉन्जर्व हो चुका है एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड. सेक्रेड म्हणजेच पवित्र. इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव्ज. दे आर इन फॅक्ट सँक्च्युरीज. मराठीत ज्याला आपण अभयारण्य म्हणतो, जिथे पक्षी प्राण्यांना अभय दिलेलं असतं. सो दे आर इन फॅक्ट सँक्च्युरीज conserved by the society and not by the government. So they are conserved by the society, not by the government forest department, as it has been conserved in the name of God. It has special protection. These clusters of thick forest, clusters म्हणजे खूप मोठे large area पुंजका. These clusters of thick forests are present not only in western ghats of India but in the entire country. पूरे कंट्री में, not only in western ghats but in entire country. More than 13,000, remember 13,000 sacred groves have been reported in India. Where such sacred groves in Maharashtra, that you just find it out. So where are such sacred groves present in Maharashtra, and make a list of those sacred groves. So here some symbols are given to you and it is said that list those and discuss about those symbols. So let us start those symbols one by one. So look at this particular symbol. This symbol tells us to keep our waste carefully. The garbage should not be thrown anywhere, but it should be properly managed. तो जो भी कचरा है वो उस डिब्बे में
डालना जरूरी है, बट इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज। वेस्ट इफ मैनेज प्रॉपरली कैन बी अ वेल्थ। तो यदि ये प्रॉपरली मैनेज किया गया तो उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। नाउ दिस पर्टिकुलर सेकंड symbol tells us to save electricity. A plug is shown here, so it tells us to save electricity. If electricity is carefully used, we can save our natural resources. This message is given through this particular picture. Now look at the picture number 3. That's a bicycle picture. Use of bicycle means use of green energy. It's a pollution free source of energy. By riding on the bicycle we save on fuel. तो आप फ्यूल की बचत भी कर सकते हैं एंड यूज आवर ओन मस्कुलर एनर्जी। यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी का यूज हो सकता है। इट इज द बेस्ट इको फ्रेंडली। तो ये जो व्हीकल है ये इको फ्रेंडली है। इट इज बेस्ट इको फ्रेंडली नॉन polluting vehicle. Now this particular symbol is giving the message that save water. पानी बहुत important है और पानी का महत्व आप जानकर उसे सेव करो। So this symbol is giving the message that save water. Sustainable use of water is necessary for our future. तो पानी का यूज ये प्रॉपरली होना जरूरी है। इस प्रकार का मैसेज इस पर्टिकुलर पिक्चर से आप लोगों को मिल रहा है। हियर यू हैव वन क्वेश्चन, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। तो ये बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व किया और की जा सकती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। जस्ट लेट अस सी वन बाय वन। प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिझम. तो जो रेअर स्पीसीज आहे, मराठीत ज्याला आपण दुर्मिळ प्राणी पक्षी म्हणूया, त्यांना प्रोटेक्शन देणं. इस्टॅब्लिश करना है. क्या इस्टॅब्लिश करना है? नॅचरल पार्क्स अँड सँक्च्युरीज. नॅचरल पार्क्स और सँक्च्युरीज. सँक्च्युरीज म्हणजे मराठीत अभयारण्य. हे इस्टॅब्लिश करायचे. डिक्लेअरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स. तो कुछ रीजन्स को बायो रिजर्व मीन्स रिजर्व फॉर बायोडाइवर्सिटी ऐसे डिक्लेयर करना जरूरी है. दैट कैन बी डन बाय गवर्नमेंट. प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज. कुछ स्पेशल स्पीसीज का कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लेना जरूरी है. जैसे टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट. कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑब्जर्विंग द रूल्स. रूल्स का फॉलो करना, रूल्स को ऑब्जर्व करना भी बहुत आवश्यक है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. मेंटेनिंग रेकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. तो जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज आहे, मराठी ज्याला आपण म्हणू पूर्व परंपरेने चालत आलेले ज्ञान किंवा आपल्याला वारसामुळे मिळणारे ज्ञान हे मेंटेन करणं जरूरी आहे. So till now we have studied the rules and regulations about environmental conservation and its protection in this lesson. So we have studied all these rules and regulation. Many people in the society are voluntary means on their own, coming together to perform this particular noble work. तो इस नोबल वर्क के लिए बहुत सारे व्यक्ती व्हॉलेंटरीली मतलब खुद होके, मराठी म्हणजे म्हणून आपण स्वतःहून एकत्र येत आहेत या चांगल्या कार्यासाठी, नोबल वर्कसाठी. मेनी इन्स्टिट्यूट्स ॲट स्टेट लेवल, national level and international level are also involved in this particular work. Now there are some institutions who are working for this cause. Some voluntary organizations are given to here and some international environmental organizations are also given. We'll take them one by one.
So one, Bombay Natural History Society, Mumbai. CPR Environment Group, New Chennai. Gandhi Peace Foundation Environment Cell, Delhi. Chipko Center in Tehri Garhwal in Uttaranchal. Center for Environmental Education, Ahmedabad in Gujarat. Kerala Science Literature Council in Trivandrum. India Agro Industries Foundation, Pune. Vikram Sarabhai Community Science Center, Ahmedabad in Gujarat. Now look at some international organization, International Environment Organization, International Union for Conservation of Nature, IUCN, Gland VD. So it is the Gland VD in Switzerland. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC in Geneva. United Nations Environment Program, UNEP in Geneva. World Wildlife Fund, that is WWF in New York. BirdLife International in Cambridge. Green Climate Fund in Songdo in South Korea. So all these national and international or some voluntary organizations keep on working towards this particular environmental conservation.